Good morning, class. Today's topic is energy band diagram. Now, here we distinguish between conductor, semiconductor, and insulator on the basis of energy band diagram. Okay. Now, as you know, what is conductor? Yes, conductor has a substance or material which has high conductivity at this room temperature and low resistivity, whereas insulator has high resistivity but low conductivity, and the semiconductor is lying between conductor and insulator. So what is the difference in the energy band diagram and what is energy band diagram? Now जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी से बाउंड है, चाहे वो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हो। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में कि अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो वहाँ पे 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में से टेट्रा वैलेंसी में 2 एस ऑर्बिटल के एंड 2 पी ऑर्बिटल के, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी होती है, ठीक है। एंड जब इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिलती है जिस एनर्जी से वो बाउंड होते हैं, देन वो मिनिमम एनर्जी मिलती है, देन वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन विल कंडक्ट। So now, what is energy band diagram? Energy band means, what is energy band? Energy band is range of energy possessed by the electrons, free electrons या electrons. तो different energy range वो possess करते हैं। अगर valence band की बात करें, there are 2 band, valence band and conduction band. तो valence band means the range, band means range of energy possessed by valence electron. And what is conduction band? Conduction means here the electron will conduct. That means free electrons conduct करते हैं. Conduction is because of free electrons, means the range of energy possessed by the free electrons is conduction band. Now there is a gap between valence band and conduction band, and that gap is called energy gap. Okay, this gap may be 0. Yes, 0 for what? It is for conductor. There is an overlapping between valence band and conduction band, means the energy of some free electrons and the energy of valence electrons will be matched, means there is overlapping. So here we distinguish between conductor, semiconductor and insulator on the basis of energy band diagram. So first, energy band diagram for conductor. So this is a band, this is a range of energy, and there is a different electrons, valence and electrons. Okay, now this is valence band and this is valence band and this is conduction band. There is some electrons which are free to conduct, and the range of energy here possessed by that electron is conduction band CB, and the difference is this energy gap, EG से denote करते हैं. This is energy gap, यानी the difference in energy level of conduction band and valence band. But this gap is 0, means the energy gap is 0 for conductor, means there is a overlapping. Here is overlapping and it is conduction band, means the free electrons energy and the valence and electrons energy, there is some matching, means they have same energy, and that is due to the overlapping. यहाँ पे हम कहते हैं तो energy gap है ही नहीं यहाँ पर. Eg is 0 for what? For conductor. So for the conductor the energy gap will be 0. Now बात करते हैं हम insulator की. So what is the energy gap for the insulator? Now there is a big gap, because you know कि there is a really we get the free electron for the conduction, means because of deficiency of free electrons, means वहाँ electrons नहीं है free electrons, तो वहाँ conductivity इसकी low होती है room temperature, and that means इनका gap बहुत ज़्यादा होता है कि उतनी एनर्जी मिलती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते नहीं. Valence band of the insulator and the conduction band of insulator, and there is a big gap, and this energy gap is more than 3 electron volt, means आपको इंसुलेटर से अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो यू हैव टू गिव मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, एंड इतनी एनर्जी जो है थर्मल से तो मिलेगी नहीं, तो आपके इस रूम टेम्परेचर पर उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, मीन्स बिकॉज द गैप ज़्यादा है फॉर द इंसुलेटर. तो दिस इज फॉर द इंसुलेटर, एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ नेक्स्ट फॉर सेमीकंडक्टर. So now energy band diagram for semiconductor. Here the gap is
less than 3 electron volt. Eg is less than 3 electron volt. Like for the silicon, it is 1.1 electron volt. For the germanium, it is 0.7 electron volt. So this is the less than 3, means for semiconductor, the energy gap will be less than 3 electron volt. मीन्स अगर आप थोड़ी सी एनर्जी दें तो आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंडक्शन में मिलेंगे. मीन्स इन बिटवीन लाई करती है इसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की. कंडक्टर से थोड़ी कम होती है बट इंसुलेटर से ज़्यादा होती है कंडक्टिविटी. एंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम बात करें मेन सिलिकॉन एलिमेंट की, जैसे जर्मेनियम है एंड सिलिकॉन है. जर्मेनियम हैज़ 0.7 अराउंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी and silicon has 1.1 electron volt. So now why this 0.7 and it is 1.1? ये गैप जर्मेनियम में कम क्यों है? यानी इजीली इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा अगर आप इतनी एनर्जी देंगे जर्मेनियम में. मींस वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप हो जाएगा इफ यू गिव दिस एनर्जी. एंड फॉर द सिलिकॉन वी रिक्वायर सम मोर एनर्जी, मींस इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. तो व्हाई दिस एनर्जी इज मोर फॉर देन जर्मेनियम? यानी एनर्जी गैप ज़्यादा क्यों है? तो क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि जो सिलिकॉन है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, तो अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो वीक हो जाता है. तो इससे क्या होता है, वो इजीली रिमूव कर सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ जर्मेनियम इज मोर देन द सिलिकॉन, तो द जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड वी कैन इजीली फ्री दिस germanium electron. That's why the energy gap of germanium is less than silicon. Okay class. So here the topic is energy band diagram, and here I have explained the distinction between conductor any metal, semiconductor and insulator on the basis of energy band diagram. In the next topic, it is also related to energy band diagram, and we study the energy band diagram of semiconductors. Yani for the intrinsic, for the extrinsic, two types there is N and P type.